This portion of the news is brought to you by Ron Carter Cadillac. Hello and welcome. You're watching NTV Houston. This is Sarah Chauhan. ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा ने ह्यूस्टन में भी अपना असर दिखाया था. लोग अब हेल्प के लिए आगे आ रहे हैं. स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं. साथ ही साथ अमेरिका से गुड न्यूज आई है कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर, वो भी आपको दिखाएंगे. और वार्न क्या किया है WHO ने, ये भी आपको बताने वाले हैं. लेकिन पहली नजर हेडलाइंस पर. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा जरूर जाएंगे. जैकब ब्लेक की फैमिली से भी करेंगे मुलाकात. व्हाइट हाउस ने किया कंफर्म. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केनोशा में 2 प्रोटेस्टर्स का मर्डर करने वाले सस्पेक्टेड को डिफेंड करते हुए आए नजर. प्रेसिडेंट ने कहा एक्यूज्ड गनमैन सीन से भागने की कोशिश कर रहा था. एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन फाइनल स्टेज ट्रायल में लास्ट मंजूरी पाने के करीब. जनवरी 2020 तक इफेक्टिव वैक्सीन की 30 मिलियन डोजेज प्रोवाइड कराने का है मकसद. वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस केसेस 25 मिलियन से ज्यादा, जबकि 856,000 से ज्यादा लोगों की मौत. अमेरिका में केसेस 6.2 मिलियन के पार. WHO ने किया वार्न, दुनिया की 90% कंट्रीज का हेल्थ सिस्टम अब डिस्ट्रॉय होने के करीब. जो देश बिना तैयारी के लॉकडाउन हटा रहे हैं वो तबाही को बुलावा दे रहे हैं. और यूरोप, चाइना, रशिया और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में बच्चों ने स्कूल में वापस आना किया शुरू. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा इंग्लैंड में इस वीक स्कूल्स रीओपन करना बेहद जरूरी. और अब न्यूज डिटेल से देखते हैं और बात सबसे पहले करेंगे ह्यूस्टन की. आपको बता दें कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म लॉरा ने ह्यूस्टन में भी अपना असर दिखाया था और अब लोगों की मदद करने के लिए बाकी लोग आगे आ रहे हैं. देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट फैजल कयूमी की ये स्पेशल रिपोर्ट. I'm standing at Gallery Furniture right now, where supplies are being collected for those impacted by Hurricane Laura. Gallery Furniture owner Jim McInvale is working with Mayor Sylvester Turner's Health Equity Response Task Force to coordinate a response to the recent hurricane. You know, we all have responsibilities for well-being of the community, and certainly Lake Charles, Port Arthur, those are part of our community. We consider them all part and parcel of who we are, so it's natural for us to reach out and try to help our neighbor, help our people. The items collected will be sent to those in need at Port Arthur, Orange, and Beaumont, Texas, as well as Sulphur and Lake Charles, Louisiana. We had the Harvey hit here. I needed help. My family needed help, so we're just trying to help as well as everybody else helped us. And they were a great help here at the Gallery Furniture, so we just thought it was best to bring it here for them. The supplies brought include diapers, cleaning supplies, hygiene items, non-perishable food, bottled water, pet food and supplies, and more. The drop-off locations include the George R. Brown Convention Center and the Gallery Furniture locations from 9 a.m. to 4 p.m. daily. From NTV Houston, this is Faisal Kayumi. प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बस कुछ ही वक्त बाकी है. ऐसे में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं. जी हाँ, ये खबर भी ह्यूस्टन से ही है और बेहद इंपॉर्टेंट है. आपको बता दें कि NRG पार्क को दरअसल 2020 इलेक्शन के लिए हेडक्वार्टर के तौर पर चुना गया है. देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान खालिद मलिक की ये स्पेशल रिपोर्ट. NRG Park named 2020 November election headquarters. NRG Park confirms the arena has chosen as the new headquarters for Harris County Clerk's Office's upcoming 2020 presidential election. NRG Arena will serve as the early voting and election location. Just last week, the Toyota Center was chosen to be another polling station. Houston Rockets and the Harris County Clerk Office announced that Toyota Center will serve as a vote center for the 2020 presidential general election. Houston Rockets and the Harris County Clerk's Office announced that the Toyota Center will serve as a vote center for the 2020 presidential general election. Toyota Center will be open to any registered voter in Harris County. Why am I voting? I am voting for justice and equality. I'm voting for quality education for all. I care what happens in my community. That's why I'm voting. Even though it's just one single vote, it could matter. Register with us today to make sure your vote counts. I'm a voter. I'm a voter. You be a voter too. The Toyota Center is a voting location for this year's election. Beginning October 13th through October 30th. October 13th to 30 in NRG Park's Blue Lot 16. Entry for all voting will be gate 8 off Kirby Drive. In-person election day voting will be held November 3rd at NRG Arena. Election day drive-through voting will be in NRG Park's Blue Lot 16, though parking and entry gates are subject to change. Hours of operations will run 7 days a week from 7 a.m. to 7 p.m.
Executive Director of the Harris County Sports and Convention Corporation, Ron Walsh, said in a statement that we are proud to provide this facility to Harris County voters to participate in one of the most important rights and responsibilities that we as citizens have. We are honored to do our part in giving our community every opportunity to vote during this unprecedented election year. NRG Park will adhere to all public health guidelines regarding social distancing and face coverings. NRG Park says they are pledged to maintain the high standards of public safety and health for the community as proud participants of Houston Clean and ASM Global's Venue Shield. Voting destinations for residents of Harris County. The Houston Texans announced they are working with NRG Park and the Harris County Clerk's Office to launch their We Are Texans, We Are Voters initiative, designed to encourage the Houston community to participate in the upcoming election process. NRG Arena will also serve as an early voting and election day location. The Houston Rockets and the Harris County Clerk's Office also announced the Toyota Center will serve as a voting center for the 2020 presidential general election. The Rockets have also partnered with I Am a Voter, a nonpartisan movement which aims to create a cultural shift around voting and civic engagement. Fans can text ROCKETS to 26797 to confirm their voter registration status. Both facilities will be open to any registered voter in Harris County from October 13th to October 30th and on Election Day, November 3rd. Concerns around a COVID-19 spread at polling station has led lawmakers to encourage voters to use mail-in ballots throughout the United States, including Texas. Usman Khalid Malik, NTV Houston. और अब न्यूज़ कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी हुई है और ये गुड न्यूज़ है अमेरिकन के लिए। जी हाँ, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अपने फाइनल स्टेज के ट्रायल में है। कोरोना वायरस खात्मे के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन अपने फाइनल ट्रायल में पहुंच चुकी है और ये लास्ट मंजूरी मिलने के करीब है। कई एजेंसियों के ग्रुप ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के तहत इस वैक्सीन का तीसरी फेज की टेस्टिंग की जा रही है। दरअसल HHSI कोविड-19 के थेरेपेटिक मेजर्स के डेवलपमेंट में तेजी लाना चाहती है और वहीं जनवरी 2020 तक इफेक्टिव वैक्सीन की 30 मिलियन डोजेज प्रोवाइड कराना इसका मकसद है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। कंपनी का कहना है कि फेज 3 के ट्रायल में अमेरिका में 80 प्लेसेस पर लगभग 30,000 वॉलंटियर को शामिल किया जाएगा। अमेरिका में 2 कंपनीज मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन भी फेज 3 के ट्रायल पर है। दोनों कंपनीज 30,000 वॉलंटियर पर ट्रायल कर रही हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन के गुड न्यूज के बाद अब बात करेंगे WHO की वार्निंग की। जी हाँ, WHO ने वार्निंग दी है कि दुनिया भर के 90% से ज्यादा देशों में हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। WHO के एक सर्वे में सामने आया है कि दुनिया के 90% से ज्यादा देशों का हेल्थ सिस्टम कोरोना वायरस की वजह से बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है। मार्च से जून के बीच मिले डेटा से पता चलता है कि हेल्थ सिस्टम चरमरा रहा है। WHO का कहना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनका और ज्यादा दिनों तक टिके रहना काफी मुश्किल है। वहीं WHO ने वार्न किया है कि जो देश बिना तैयारी के लॉकडाउन हटा रहे हैं वो तबाही को बुलावा दे रहे हैं। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते कई रूटीन अपॉइंटमेंट्स और स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। पेंडेमिक की वजह से कैंसर के इलाज जैसे क्रिटिकल केयर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है और वहीं कम अर्निंग वाले देशों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आधे से ज्यादा देशों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट और साथ ही कैंसर का ट्रीटमेंट अफेक्टेड हुआ है। 1/4 देशों में लाइफ सेविंग इमरजेंसी सर्विस अफेक्टेड हुई है। No country can just pretend the pandemic is over. The reality is that this coronavirus spreads easily. It can be fatal to people of all ages, and most people remain susceptible. If countries are serious about opening up, they must be serious about suppressing transmission and saving lives. The more control countries have over the virus, the more they can open up. Opening up without having control is a recipe for disaster. और अब न्यूज केनोशा से है। आपको बता दें कि केनोशा में हुए प्रोटेस्ट में 2 प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी गई थी, लेकिन अब सस्पेक्टेड को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप केनोशा में 2 प्रोटेस्टर्स का मर्डर करने वाले सस्पेक्टेड गनमैन को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अक्यूज्ड गनमैन सीन से भागने की कोशिश कर रहा था। अगर वो फायरिंग नहीं करते तो शायद डेमोन्स्ट्रेटर्स उसे मार देते। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि काइल ने गोली सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए चलाई थी। इस मामले में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का और क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। We're looking at all of it. That was an interesting situation. You saw the same tape as I saw, and he was trying to get away from them, I guess, it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him,
and it was something that we're looking at right now, and it's under investigation. But I guess he was in very big trouble. He would have been. He probably would have been killed. But it's under investigation. और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जिस तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको हवा दे रहे हैं जो बाइडेन। व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से लेफ्ट विंग सिविल अनरेस्ट इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन किए जाएंगे। और वहीं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राइवल जो बाइडेन पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो वेंडल्स को मॉरल एड और कंफर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। I also want to provide an update on left-wing political violence that we're seeing in Democrat-run cities. Under my administration, federal law enforcement is working with state and local authorities all over the country to comb through hours of video, track down rioters, looters, and arsonists, and bring them to justice. We've just come up with a report that we've arrested a large number of people. It's over 200. And you'll be hearing about that, but they've been arrested in various cities throughout the United States. We're doing it very low-key, but we're trying to help cities. They are, in all cases, Democrat-run, but we're doing the best we can to help them without really much of a consent. We'd like to have the consent. As an example, in Portland, we could solve that problem in approximately 1 hour, but the mayor refuses, perhaps for political reasons. I don't know why it's good for him to have a city that's falling apart and that's under siege now for 94 days. The Department of Homeland Security and the Department of Justice are announcing a joint operations center to investigate the violent left-wing civil unrest. And again, in Portland alone, the federal government has already taken care of and arrested 100 rioters. तो एक तरफ जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन को क्रिटिसाइज किया, लेकिन उसके बाद जो बाइडेन ने भी जवाब दिया। और वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की एक्यूजेशंस का भी खूब जवाब दिया। बैटल ग्राउंड स्टेट पेंसिल्वेनिया में बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेशन वाइड प्रोटेस्ट में लगातार केओस को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वायलेंस को नहीं रोक सकते क्योंकि वायलेंस को प्रमोट करने वाले वो खुद हैं। और वहीं प्रोटेस्ट के दौरान होने वाली लूटमार पर जो बाइडेन ने कहा कि लूटिंग को प्रोटेस्ट का नाम नहीं दिया जा सकता, ये सरासर लॉलेसनेस है। और क्या कुछ कहा जो बाइडेन ने, आइए ये भी देख लेते हैं। This president long ago forfeited any moral leadership in this country. He can't stop the violence because for years he's fomented it. You know, he may believe mouthing the words law and order makes him strong, but his failure to call on his own supporters to stop acting as an armed militia in this country shows how weak he is. I want to make it absolutely clear, something very clear about all of this. Rioting is not protesting. Looting is not protesting. Setting fires is not protesting. None of this is protesting. It's lawlessness, plain and simple. And those who do it should be prosecuted. Violence will not bring change. It will only bring destruction. It's wrong in every way. It divides instead of unites. Destroys businesses, only hurts the working families that serve the community. It makes things worse across the board, not better. COVID has taken this year, just since the outbreak, has taken more than 100 years. Look, here's the lives, when you think about it, more lives this year than any other year for the past 100 years. More than 180,000 lives in just 6 months. केनोशा में लगातार प्रोटेस्ट देखे गए हैं और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वहां पर जाना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो केनोशा जरूर जाएंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी काइली मैकनी ने कंफर्म किया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विस्कॉन्सिन के शहर केनोशा जरूर जाएंगे। जब प्रेस सेक्रेटरी से पूछा गया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जेकब ब्लेक की फैमिली से भी मुलाकात करेंगे, तो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि करंट प्लान के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात लॉ इन्फोर्समेंट और कुछ बिजनेस ओनर से होगी। President Trump will visit Kenosha, Wisconsin tomorrow. This president will show up. He will go to cities where Americans are hurting. And with that, I'll take questions. The president is not going to, again, weigh in on that. You can ask him this evening. He may weigh in further, but at the moment, he's not weighing into that. Currently, the plans are to meet with local law enforcement and some business owners, and he'll survey the damage. But there will be more detailed plans forthcoming that are announced.
तो केनोशा में लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और इस पर ऑफिशियल्स का कहना है कि इसके पीछे हाथ आउटसाइडर्स एजिटेटर्स का है। केनोशा में ऑफिशियल्स ने क्लेम किया है कि कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट के पीछे आउटसाइड एजिटेटर्स का हाथ नजर आ रहा है। काउंटी शेरिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एजिटेटर्स फॉल्स सोशल मीडिया पोस्ट और फोन कॉल्स के जरिए रेजिडेंट्स को उकसा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ केनोशा मेयर जॉन का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर लोगों को कम्युनिटी में खौफ फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। There have been a few arrests. There's been over 200 arrests since this started. Over half of those have come from outside of Kenosha. What I've learned this last week more about these types of events, things I've never known before. And I've learned that, and this is really for the people of Kenosha and any place this would happen again, there are a lot of outside agitators that try to scare people. They will make phone calls to businesses, to churches, to residents, trying to scare and intimidate. Don't let them do that. Don't pass along social media that has been passed along and actually created to scare people. We have vetted out thousands of social media, I don't know what you call it, but little pages, little snapshots or quotes. And most all of them have been false. Another one that they said that this group was going to go out into the county in different subdivisions and different towns, and they were going to start burning and looting, which created a big scare for people in Kenosha. And we looked into it. We have, as I said earlier, we have a lot of resources here investigating that stuff, and a lot of it gets out to the public, it gets spread thousands of times over, and by the time we can actually research it, 1,000 people know about it and they're afraid. We need to deal with our own issues. I don't need outside groups trying to agitate my community, or try to, I shouldn't say agitate, try to scare my community. तो केनोशा में जेकब ब्लेक को गोली मार दी गई थी और अभी वो इंजर्ड हैं। लगातार उनके फादर और अंकल सामने आ रहे हैं और अब जेकब ब्लेक के अंकल का ये कहना है कि जो ब्लैक कम्युनिटी है उनके लिए दरअसल ऑफिशियल्स को आगे आना चाहिए। केनोशा में पुलिस फायरिंग से जख्मी होने वाले जेकब ब्लेक के अंकल ने ब्लैक कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए न्यू लेजिस्लेशन की डिमांड की है। एक इंटरव्यू में जस्टिन ब्लेक ने कहा कि उनकी कम्युनिटी के लोग लंबे अरसे से डिस्क्रिमिनेशन और अब्यूज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे में उनका गुस्सा जस्टिफाइड है। Well, first off, we got to meet many of the families in Washington, D.C. at Reverend Al Sharpton's march for Martin Luther King the prior weekend. And man, our family sends love out to all those families. Because as bad as Jake is, he's alive. Their families aren't. So this is like a war. What happens after the first shot is fired? It becomes a strategical game and a strategical field of war. We're at war, so we fired the first shots. You don't think people would be upset enough after 300 years of being abused, discriminated against, would go burn down a building? Come on, there's going to be some people that feel that way. But now that that's over, let's get to the business of the day. Let's get some legislation, let's get some laws, and let's get some things in place that will protect us so hereforward this won't go on. And the only way we can do that is do it strategically, go for laws, bills, and other things that will protect little Jakes all over this world. एक तरफ केनोशा में प्रोटेस्ट तो वहीं पोर्टलैंड में भी अनरेस्ट नजर आ रहा है और अब आपको बता दें कि लोग पोर्टलैंड के मेयर से रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। पोर्टलैंड सिटी में प्रोटेस्टर्स ने मेयर से रिजाइन करने के लिए कहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के खिलाफ पोर्टलैंड में लगातार 95 दिन भी अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। लोग अब पोर्टलैंड मेयर से रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। दरअसल मेयर टेड व्हीलर के घर की तरफ मार्च करते हुए डेमोन्स्ट्रेटर्स ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था रिजाइन। और वहीं दूसरी तरफ क्राउड्स को कंट्रोल करने के लिए स्टेट पुलिस और नेबरिंग सबर्ब से लॉ इन्फोर्समेंट को डाउनटाउन पोर्टलैंड में डिप्लॉय किया गया था। मंडे नाइट प्रोटेस्टर्स की असेंबली को पुलिस ने रॉयट डिक्लेयर किया था और वहीं प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया गया। और अब बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कोरोना वायरस केसेस की। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं। अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका में भी केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के 46 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कोरोना वायरस केसेस लगातार देखने को मिल रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस केसेस 25 मिलियन से ज्यादा है जबकि डेथ टोल 856,000 से भी ज्यादा।
बात अगर यूनाइटेड स्टेट्स की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के 46 स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स कोरोना वायरस केसेस के मामले में लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में कोरोना वायरस केसेस 6.2 मिलियन से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 187,000 से भी ऊपर। वहीं ब्राजील सेकंड नंबर पर है। ब्राजील में 3.9 मिलियन से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं, जबकि डेथ टोल 121,000 से भी ऊपर। इंडिया थर्ड नंबर पर है। इंडिया में लॉकडाउन के बावजूद भी कोरोना वायरस केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडिया में अब केसेस 3.7 मिलियन से ज्यादा हैं, जबकि डेथ टोल 65,000 से भी ऊपर। बात अगर रशिया की करें तो रशिया में अप्रैल मंथ में लॉकडाउन लगा दिया गया। जून में कुछ हद तक लॉकडाउन को हटाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना वायरस केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं रशिया ने पहली कोरोना वायरस वैक्सीन भी बनाई है, लेकिन केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। रशिया में कोरोना वायरस के केसेस 1 मिलियन से ज्यादा हैं और डेथ टोल 17,299। बात करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन की। रशिया और चाइना लगातार कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स ने वार्न किया है कि ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बिल्कुल भी सेफ नहीं है। साइंटिस्ट ने रशिया और चाइना में लोगों पर इस्तेमाल होने वाली कोविड-19 वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि ये वैक्सीन कॉमन कोल्ड पर बेस्ड है और शायद ये कोरोना वायरस ट्रीट करने के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं है। चाइना की कैंसिनो बायोलॉजिक की वैक्सीन में एडिनोवायरस टाइप 5 या फिर एट5 का मॉडिफाइड इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रशिया के जमेलिया इंस्टीट्यूट ने भी एट5 और एक और लेस कॉमन एडिनोवायरस की बेस पर वैक्सीन तैयार की है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसी जगहों में रहने वाले 40% लोगों में एट5 के अगेंस्ट ऑलरेडी हाई लेवल एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं और अफ्रीका में ये ज्यादा से ज्यादा 80% लोगों में मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट ने कंसर्न शो करते हुए कहा है कि एट5 के खिलाफ एंटीबॉडीज की वजह से इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस की बजाय वेक्टर पर हमला कर सकता है। तो दुनिया भर की नजरें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर हैं, लेकिन कनाडा ने दरअसल 2 कंपनीज के साथ एक टाई अप किया है ताकि उन्हें जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन मिल सके। कोरोना वायरस की लाखों डोजेस पाने के लिए कनाडा ने नोवावैक्स और जॉनसन एंड जॉनसन के साथ एग्रीमेंट किया है। कनाडा इससे पहले फाइजर और मॉडर्ना के साथ भी वैक्सीन के लिए सेपरेट डील कर चुका है। नोवावैक्स ने एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन के 76 मिलियन डोजेस बनाने पर एग्री किया है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से वैक्सीन की 38 मिलियन डोजेस सप्लाई की जाएंगी। कंपनीज के मुताबिक दोनों एग्रीमेंट्स के लिए हेल्थ कनाडा से लाइसेंसेस की शर्त रखी गई है। एग्रीमेंट के फाइनेंशियल टर्म को डिस्क्लोज नहीं किया गया है अभी तक। और अब बात करेंगे स्कूल रीओपनिंग की। जी हाँ, यूरोप, चाइना और रशिया में बच्चों ने स्कूल में आना शुरू कर दिया है। यूरोप, चाइना, रशिया और दुनिया के दूसरे पार्ट्स में लाखों बच्चों ने स्कूल्स में वापस आना शुरू कर दिया है। स्कूल में बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हैंड क्लींजिंग स्टेशंस एस्टेब्लिश किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है और रश से बचने के लिए अलग अलग प्ले टाइम अलाउ किया जा रहा है। स्कूल में कंटेजन को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रीज में डिफरेंट अप्रोचेस अपनाई जा रही हैं। स्पेन के 17 रीजन में बैक टू स्कूल प्लान तैयार किया जा रहा है और वहीं 6 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मैंडेटरी मास्क जैसे नेशनल रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा रहा है। और वहीं बात अगर जर्मनी की करें तो जर्मनी में स्कूल अर्ली अगस्त से ही खुलना शुरू हो चुके हैं। और वहीं देखा जाए तो 20 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स में कोरोना वायरस केसेस का प्रोपोर्शन अब काफी स्टेबल है। स्कूल्स खुले रहने के बावजूद स्टूडेंट्स में हायर इन्फेक्शन रेट नहीं देखा गया है। और वहीं स्कॉटलैंड में भी स्कूल रीओपन हो चुके हैं। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फेस मास्क मैंडेटरी किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जोर दिया है कि इंग्लैंड में इस वीक स्कूल्स रीओपन करना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बदल चुका है और उसका पूरा असर वेनिस फिल्म फेस्टिवल पर भी देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि रेड कारपेट पर स्टार्स बहुत कम नजर आएंगे। इस साल वेनिस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चंद एक हॉलीवुड स्टार्स ही नजर आएंगे, जबकि फैंस को वेन्यू के आसपास खड़ा होने की इजाजत नहीं है। डायरेक्टर अल्बर्टो का कहना है कि कोरोना वायरस रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद वेनिस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाना एक पॉजिटिव मैसेज है। उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा फर्दर लॉकडाउन बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। थिएटर्स को अब खोल देना चाहिए। We decided to organize the festival also in a difficult moment under difficult circumstances because we think that it's time to restart for cinema. We cannot stay anymore in lockdown. Cinema cannot afford to stay any longer in lockdown. We need to reopen theaters. We need to distribute new films. We need to start shooting new film again. And I hope that the festival will be a sign
solidarity and encouragement for everybody involved with the film industry. Well, you know, I'm not so concerned because Italy is quite safe from this point of view. It's probably one of the countries in Europe with less contagion at the moment. The situation seems to be absolutely under control. So there are some small clusters, but they are under strict control. So I'm not so worried about let's say, the next future, at least for the festival. और न्यूज़ के बाद अब बात करेंगे वेदर की। जी हाँ, आपके शहर में मौसम का हाल क्या रहने वाला है, इसके लिए देखिए वेदर अपडेट्स। That's all for now. This is Sarah Chauhan signing off. Stay tuned with NTV Houston.